Hello everyone, today we will discuss poem A Small Needful Fact, and it was written by Rose Kay, who is an American poet and also the professor. This poem was written in 1915 in the collection of the poems, and this poem was inspiration from the incident that was occurred in 1914 in America. 1914 में ऐसा हुआ कि एक ब्लैक अमेरिकन जो कि गार्डनिंग के प्रोफेशन से मुंसलिक था, जिसका नाम एरिक गार्नर था, उसको न्यूयॉर्क पुलिस ने किल कर दिया जस्ट ड्यू टू द रेसिज्म or due to the discrimination that was existing in American society, because at that time American society was divided in two poles. One is black and other one is the white, oppressor oppressed, superior and inferior. Or after that, jury decided that the police officers and they are not the responsible for the killing of the black American. So Rose Gay was just taking the allusion or inspiration from that incident, and this poem is a hope in the face of despair. And Eric Garner legacy and his contribution towards humanity as a gardener and impact of a man who is alive. जो स्पीकर है वो हमें ये मैसेज देता है कि एरिक गार्नर, जो कि गार्डनिंग एंड प्लांटेशन के प्रोफेशन से मुंसलिक है, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमैनिटी को ऑन दिस प्लानट, क्या कर रहा है? प्लांटेशन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है, और नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बींग्स, ऑल्सो फॉर द अदर क्रिएचर्स लाइक द इंसेक्ट, लाइक द बर्ड्स, उनके लिए खुराक, शेल्टर जो है प्रोवाइड कर रहा है. सो एरिक Garner's last word, I can't breathe, became anti-racist really. इवन कि इस इंसिडेंट ने पूरे अमेरिका के अंदर जो एंटी रेसिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे उन्हें उभारा और लोगों ने मूवमेंट का आगाज़ किया बराबरी की बुनियाद पर, बिकॉज एरिक गार्नर वॉज सच काइंड ऑफ पर्सन हु डिडंट गेट द बेसिक ह्यूमन राइट. क्या होता है इंसान की ज़िंदगी का जो एक बेसिक एलिमेंट्स में, एक तो फूड शेल्टर वगैरह होता है, और दूसरा जो है बिल्कुल प्रोटेक्शन उसे दी जाए एज अ ह्यूमन बींग्स. लेकिन न्यूयॉर्क पुलिस ने उसे ब्लैक अमेरिकन होने की वजह से, रेसिज्म की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से, ब्रूटैलिटी के साथ, क्रूल एटीट्यूड और इनजस्टिस की वजह से उसे मार दिया. सो ही वॉज जस्ट ट्राई टू पोर्ट्रेट द कंपैरिजन बिटवीन द स्मॉल नीडफुल फैक्ट of that person Eric Garner and as well as the police. आप दोनों को देखें, कंपैरिजन करें. one person is giving the contribution to the humanity and other person is like the police officer who was creating the killing of the black Americans. ये वो टाइम पीरियड था जब अमेरिकन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, diversified society, and the black people were considered as the inferior second class citizens. They unable to get the right for the participation and employment opportunities because they have to face the socioeconomic problems in the American society. They are getting the jobs like maids, sweepers, like that, because they were considering them they are below the level of first citizen, or and so these are the things which were creating a division in the American society. The tone of this poem is a respectful for Eric Garner and his life, and he was providing a kind of service, and also reminding the reader that ही वॉज अ पर्सन जिसकी एक फैमिली थी, कुछ होप्स थी, कुछ फीलिंग्स थी, कुछ ड्रीम्स थे फ्यूचर के बारे में. सो स्पीकर जस्ट वांट टू कन्वे अस दैट कि डोंट टेक इट एज अ न्यूज़ स्टोरी. उसकी लेगेसी को अंडरस्टैंड करें, उसकी लेगेसी, उसकी कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी के लिए एज अ गार्डनर एंड इम्पैक्ट ऑफ मैन हु इज़ अलाइव. इसी तरीके से अगर इसके हम स्ट्रक्चर को देखें, द पोम वॉज रिटन इन द फ्री वर्ड्स एंड वन स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 15 लाइन एंड यूज ऑफ एंजॉयमेंट स्टाइल, जहाँ पे आपको आइडिया एक लाइन से दूसरी लाइन में मूव करता हुआ नजर आएगा. दिस पोम हैज illustrated brutality, cruelty and injustice of the racism through the police department, New York police, which took the Eric most basic human right of survival. इसी तरीके से it is a tragedy of a black man who became a victim due to the racism in American society, and Eric Garner, who was the gardener, and he was making this
planet beautiful, and a place of a living for the other creature, human beings, birds, insects. So अगर आप देखें तो उसकी कंट्रीब्यूशन वाज अ बिग वन। वो अपने जो थे लार्ज हैंड्स के साथ क्या करता था, प्लांटेशन किया करता था, ठीक है। और इस तरीके से जो है लोगों के लिए वो एक होप था, उम्मीद था। लेकिन अगर आप उसके साथ जो एटीट्यूड पुलिस ने किया, तो वो स्पीकर वो सेइंग कि आप इन दोनों के एटीट्यूड और दोनों के एक्ट्स को कंपेयर करें, एंड दिस ट्रेजेडी लीड्स टूवर्ड द वायलेंस। तमाम कंट्री अमेरिका में जो है एंटी रेसिस जो रिलीज है उसका आगाज हो गया। एरिक गार्नर लेगेसी विल कंटिन्यू इन फॉर्म ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट, एंड इट कुड बी प्लेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फॉर द एफ्रो अमेरिकन पीपल। अगर हम देखें तो अल्यूजन एक और है, एक तो इंसिडेंट से, दूसरी फ्रेडरिक डोगलस जो है उसकी जो है ब्यूटीफुल जो है सोनेट है, जिसमें वो रिप्रेजेंट कर रहा है अफ्रो अमेरिकन्स के लिए जस्टिस की डिमांड करता है और कॉल्स फॉर लिबर्टी। सो नीडफुल टू मैन एज एयर। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमें ज़िंदगी के दो पहलू नज़र आते हैं, एक लव और दूसरा सोरो। दैट्स वाई राइटर्स, पोइट्स एंड पब्लिशर ऑफ द 20th सेंचुरीज मोमेंट, आप उनके अंदर उनकी राइटिंग में ट्रेसेस देखेंगे रेशियल इनजस्टिस के, पुलिस ब्रूटैलिटी के एंड सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी के। यहाँ एक दो और इंसिडेंट को मैं कोट करना चाहूँगी। एक तो ये टैमराइज था जो कि 12 इयर्स ओल्ड बॉय था, हु वाज प्लेइंग विद द टॉय गन, और जिसे विक्टिमाइज किया गया just due to the racism, due to the injustice, due to the brutality by the पुलिस। और सेकेंड वन इज़ द जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा फेमस है 2020। सो बेसिकली दिस पोम वॉज गिविंग अ रियलाइजेशन टू अस दैट एफ्रो अमेरिकन पीपल, they are also the human beings, they are also the equal citizens like the white American, and American society, which is a diversified society, and everyone is doing the contribution, even the people who are black, who is contributing in fulfilling the dream of America. So it's all about this poem. Thank you very much.